मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है. Welcome to this edition of Manushi Samvad. Today, as you already know, we have a very special guest, the one and only Subramanian Swamy. Welcome, Dr. Swamy, and thank you for taking out the time, very graciously accepting my invitation to be on this show. तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैंने विशेषकर आपको इसलिए चुना क्योंकि आप जानते हैं कि उनके बारे में कितनी माइथोलॉजी नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट कर दी गई है, कितनी धुंध है, कितनी फॉग है. और उनके जो फॉलोअर्स भी हैं वो भी उनको पार्टिजन एजेंडा के तहत पेश करते हैं, और जो उनके विरोधी हैं वो तो खैर. परंतु अभी पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है जब से ये सरकार भाजपा सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के बारे में काफी कुछ बोलना शुरू किया है, तो कम से कम ही इज बिकम अ मेन रेफरेंस पॉइंट इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया. Thus far, I mean, through the UPA and the Congress regimes, he was a very marginal figure. Please tell us, where does he belong, and how do you demystify him? What are the issues on which he needs to be understood better? धन्यवाद मधु जी. ये जो आपने विषय निकाला है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे देश में हमारी स्वतंत्र पाने के बाद जो नेहरू परिवार ने एक इतिहास को एक दृष्टिकोण दी जिससे सिर्फ नेहरू परिवार का ही जय जयकार हुआ और बाकी लोगों को किनारे में डाला गया. इसमें सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर नहीं, सरदार पटेल और अनेक और जो त्यागी थे, जयप्रकाश नारायण, जो हमारी स्वतंत्रता के और स्वतंत्र के लिए जो लड़े, उनको उन्होंने पीछे करके जवाहरलाल नेहरू उन्होंने लोकतंत्र लाए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये सारी चीज़ों करके लेकिन हमारे आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी आई, वहाँ से थोड़ा शुरू हुई और अब धीरे धीरे हमारी इतिहास को ठीक करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको उसमें नए संशोधन के लिए और रिसर्च के लिए अब एक प्रावधान भी है, एक व्यवस्था भी है. तो इसीलिए आज के परिस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर कौन और वो उनकी जो विचारें थे वो क्या, इसके लिए जो हमें गहराई से इस पर शोध और अनुसंधान करनी चाहिए, उसके लिए ये आज जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि ये आम भाषा में जनता के बीच में जानी चाहिए. मैं ये समझता हूँ कि दो दृष्टिकोण हैं जो इस अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको दूषित किया है. एक है वामपंथी का और दूसरा है, जैसे अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी इनके ऊपर, अंबेडकर के ऊपर, जिसमें ज़्यादातर उनकी जो प्रतिमा है उसको उन्होंने नष्ट किया. लेकिन इन दोनों के बीच में हमारी जो कर्तव्य आज है वो है कि उनकी विश्लेषण का नाकाम करना है, उसको एक जवाब देना की जगह में अंबेडकर क्या थे, उसमें मैं आज थोड़ा जोर देने चाहता हूँ. मैं ये समझता हूँ कि अंबेडकर के बाद 3 गुण बिल्कुल स्पष्ट हैं. एक है वो ज्ञानी थे, और मैं अभी उसके लिए सबूत और प्रमाण दूंगा जिससे उनकी ज्ञानी की जो हैसियत थी, स्टेटस थी, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है. फिर दूसरा है वो त्यागी थे, और तीसरा है कि वो साहसी थे. अब ये 3 गुण जो हैं कृष्ण भगवान ने सबसे उच्च माना है भगवत गीता में, और वास्तव में
ब्राह्मण तो पैदा होते हैं, ऐसा आजकल लोग सोचते हैं, परंतु ये गीता पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाती है कि ये जो वर्ण व्यवस्था 4 भाग में बनी थी, वो गुणों के आधार पर बनी थी। और इसलिए विश्वामित्र यद्यपि उनके माता-पिता क्षत्रिय थे, फिर भी उनको महर्षि माना जाता था। और वेद व्यासा का माँ मछुआरा थी, तब भी उसको महर्षि माना गया था। तो वो जो कल्पना है उसको हमें लानी चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलित की जो दलित शब्द जो नई बनी है, वामपंथियों ने बनाई है, जो पिछड़ी जाति हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट जिनको संविधान में लिखा है, उनकी ही नेता बनाने की जो प्रयास है उसको भी हमें भंग करना चाहिए। तो जब मैं ये कहूँगा तो मैं कहूँगा 4 बातें पर आपको ध्यान देना चाहिए जहाँ तक उसकी ज्ञानी की जो अंतस्थ है या ज्ञानी की जो हैसियत है उसको सामने लाने के लिए। पहला है कि वो एक अर्थशास्त्री थे। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसको आईवी लीग कॉलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं अमेरिका में, वहाँ जाकर उन्होंने स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी के लिए गए थे। और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी भारत के इतिहास पर उन्होंने लेख लिखा, सेमिनार्स में गए, और जो बातें हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते उस समय उन्होंने कहा जब हम लोग अभी कहने लग गए हैं। और यानी 100 साल पहले जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सेमिनार्स में, और वो छपे हुए हैं, वो आज हम उसको अपने इतिहास की पुस्तकों में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में उसको उन जो तर्क है या उनकी जो वास्तविकता है उसको लाने के लिए कर रहे हैं, परंतु अंबेडकर को वो उसमें श्रेय नहीं दी जा रही है। तो ये मुझे खेद की बात है। तो पहला है कि वो उन्होंने पीएचडी ली और उन्होंने रुपए पर लिखा कि इंडियन रूपी जो है वो ऊपर नीचे कैसे जाती है, और उसमें उन्होंने जो सुझाव दिए उस कारण से ही बाद में उन्हीं मुद्दे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार भारत में बनी। तो उनका कंट्रीब्यूशन अर्थशास्त्र में उसी समय बना जब उन्होंने पीएचडी थीसिस लिखी, और पीएचडी थीसिस मनी पर लिखी, रुपए पर लिखी, और उसके ऊपर नीचे जाने की जो तर्क हैं उसके बारे उन्होंने कहा था। लेकिन उसी समय उन्होंने एक सेमिनार में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने हमारी जो भारत की वास्तविक इतिहास है, उन्होंने ब्रिटिश की बनाई हुई इतिहास को रिजेक्ट किया और कहा कि वास्तव में हमारे वेद और हमारी उपनिषद से, हमारी पुराण से हम निकालेंगे अपनी इतिहास, तो ये है इतिहास जो आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नए हिस्ट्री बुक्स में जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें जो विवरण है मैं अभी बताने वाला हूँ, परंतु पहले जो मैं जिसको मैं कहूँगा अंबेडकर के 4 स्तंभ थे, उसमें पहला वो अर्थशास्त्री थे, और उनको पीएचडी मिली। कब मिली? आखिर में जब कॉन्वोकेशन हुआ तो 1927 हो गई थी, लेकिन वो 1916 में गए, फिर उन्होंने एमए कोलंबिया में की, फिर और पढ़े, और आखिर में पीएचडी लिखने की करके उसकी सारी फॉर्मेलिटीज करके डिग्री बनी 1927 में। तो ये एक सबको जानना चाहिए कि अंबेडकर सिर्फ वकील नहीं थे। लोग समझते थे वो वकील थे, वकील भी थे, वो मैं अभी आ रहा हूँ उसके बारे। तो दूसरा है कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के लिए जो बातें उन्होंने अनेक जगह में, लिखित में, सेमिनार्स में, इंडिया के मैगजीन्स में भी उन्होंने अमेरिका में रहते हुए उन्होंने छपवाया, उसके मैं समझता हूँ कि
अंबेडकर की जो बनी हुई है बिल्डिंग राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली में, उसमें हो सकता है उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, परंतु वो अमेरिका के जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ मिलते हैं, वहाँ मैंने पढ़ा है। तो ये दूसरी बात उनके बारे है। तीसरी बात है कि सारा संविधान का ड्राफ्टिंग, मैंने एक पहले सब मिलकर के एक ड्राफ्ट बनाई और उसके बाद बहस हुई और फिर संशोधन आए, संशोधन को जोड़ना, किस संशोधन को स्वीकार करना, किसको नाकाम करना, इसको रिजेक्ट करना, ये अंबेडकर ने अकेला की थी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ दिखता है, हर जगह में अंबेडकर ने की। 3 बड़े हस्ती खड़े हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक अध्यक्ष, वो थे राजेंद्र प्रसाद। दूसरा था मूलभूत अधिकार के लिए जो समिति बनी, उसका अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और तीसरा, इसको पेश करके, इसमें संशोधन ले करके इसको फाइनल करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता था, उसका अध्यक्ष थे अंबेडकर। तो अंबेडकर की इतनी बड़ी पोजीशन उस समय थी। इसमें आप देखिए जवाहरलाल नेहरू कहीं नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते थे जब उनको कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो मैं ये कहता हूं कि चौथी बात जो मैंने कहा कि 4 स्तंभ हैं जिस पर अंबेडकर की प्रतिमा खड़ी है, वो है उन्होंने हमारी जो स्वतंत्र है, हम किस प्रकार से होना चाहिए, क्या देश का विभाजन होना चाहिए, देश का पार्टीशन होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए, उन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं जो आज कई लोग चुपचाप आपस में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन होना ही है तो फिर पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि विभाजन होगी और जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुई थी, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसमें पास होने जब हुई, तो ये साफ कहा था कि हमारा जो लक्ष्य है वो है कि हिंदू शासित भारत और एक मुस्लिम शासित पाकिस्तान, ये इसका हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम ये बिल ला रहे हैं। इसमें इंग्लैंड में ये कहा था। ये इसमें जो यानी परिवर्तन लाया या संशोधन किया था, वो तो बिल पास होने के बाद इंडिया में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों ने कहा था कि जो मुसलमान यहाँ रहने चाहते हैं वो रह सकते हैं, उनको हम नहीं पाकिस्तान ने तो ये मर्यादा नहीं दिखाई, उन्होंने हमारे लोगों की मार काट की और लोगों को भगाया एक्सेट्रा। बट अंबेडकर ने पाकिस्तान पर 2 पुस्तक लिखे, एक 1940 में और एक 1945 में, और दोनों में उन्होंने कहा कि खून खराबा बहुत होगा और हमारी रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल रहेगा, इसीलिए या हम एक देश रहें या हम यानी पॉपुलेशन एक्सचेंज के बाद देश को बनाए, एक हिंदू रूल्ड और एक मुस्लिम रूल जैसे बिल में बनी थी। तो उन समय तो ये जवाहरलाल नेहरू के और उनके साथी अंबेडकर को कम्युनल कहते थे और फैनेटिक कहते थे, परंतु आज हम जब देखते हैं ये हमारे कहीं भी जो अंबेडकर को लेकर यहाँ डंडोरा पिटा कर पीट कर चल रहे हैं, उन्होंने कभी ये बात कही नहीं। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अंबेडकर की पुस्तक निकालिए पाकिस्तान पर, और 2 पुस्तक हैं, उसमें आप पढ़िए, उसमें ये सब लिखा है। तो मैं शुरू में ये कहता हूँ कि प्रतिमा उनकी है बहुआयाम, इकोनॉमिक्स की स्कॉलर, विद्वान, उसी प्रकार से उन्होंने इंडियन हमारे भारत के इतिहास की ज्ञानी, और तीसरा संविधान बनाने के एक निपुण, एक एक्सपर्ट, जिन्होंने सारी ड्राफ्टिंग करके बनाई।
और चौथा है कि हमारे भारत की जो स्वाधीनता है उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। 4 यानी स्तंभ पर, पिलर्स पर उनकी प्रतिमा है। अब एक एक शायद आप भूले हैं, आपने हाँ, उनके जो गुण बताए थे, साहसी और त्यागी भी उसमें थे। हाँ, त्यागी, हाँ, उसमें मैं आ आएँगे रहा आप? मैं हाँ, आ जी, जी। मैं तो अभी ज्ञानी के लिए बात कर रहा हूँ। त्यागी के लिए मैं आऊँगा। अब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इन्हीं पहले तो वो लॉ मिनिस्टर बने, संविधान पास होने के बाद हमारे देश में एक इंटरिम सरकार बनी 1952 के चुनाव के पहले, और उसमें वो मिनिस्टर ऑफ लॉ थे। लेकिन चुनाव में वो अपने आप खड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे। उनके रिपब्लिक पार्टी की एक रूपरेखा बन रही थी और उनको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा की और कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया। कैसे हराया? बूथ में जाकर जो बूथ एजेंट्स हैं उनको हटवाया, और डॉक्टर अंबेडकर 2 बार लोकसभा के लिए लड़े, दोनों बार हारे। और और उन्होंने, मैं इसको भी एक त्याग का भावना कहता हूँ। उनको चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहीं भी आप इंटरनेशनल यूएन में जाकर वकील के रूप में जा सकते थे या अर्थशास्त्री के रूप में जा सकते थे, परंतु उन्होंने विदेश जाना बिल्कुल छोड़ दिया, भारत में ही रहे, और ये एक बहुत बड़ा त्याग का उनका ही है। और उन्होंने जो बातें ऐसी कही हैं, आज हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। धारा 370 हमारी संविधान में, अंबेडकर को शेख अब्दुल्ला आकर कहा कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, कब कहे? आखिर में, क्योंकि नवंबर 25 तारीख तक हमारी संविधान, यानी 25 नवंबर 1949 1950 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाना था, तो संविधान तैयार होना चाहिए था। तो उसको पास करते 10 दिन पहले, यानी नवंबर 15 को शेख अब्दुल्ला आए और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि नेहरू ने कहा है कि एक एडिशनल एक धारा लानी चाहिए हमारे संविधान में, वो है 370, धारा 370, टेम्पररीली, माने अस्थायी रूप से कश्मीर को अलग करने का। तो अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं इसको पेश नहीं करूंगा, किसी हालत में मैं पेश नहीं करूंगा। तो अब जवाहरलाल नेहरू घबरा गए, उनको हिम्मत नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आकर ये कहने के लिए। तो उन्होंने भोलानाथ सरदार पटेल को पकड़ा और कहा कि मुझे जरूरी अब लंदन जाना है कोई कॉमनवेल्थ मीटिंग के लिए, और आप कृपया इसको इसको अंबेडकर को समझा के इसको पास कराइए। जब पटेल गए थे और उन्होंने इनको कहा, अंबेडकर को, ये तो अस्थाई है, इट टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए है। यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कोई याचिका पेश की है, उसकी सुनवाई तक है। इस तरीके से वो समझाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, ये बिल्कुल संविधान का सारा जो आधार है उसको नष्ट करेगा, तो इसीलिए मैं तो नहीं करूंगा। तब पटेल ने उनसे पूछा फिर उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा मैं हट जाऊंगा, तुम किसी और को लाकर कराओ। तो गोपाल स्वामी अयंगार, जो कश्मीर के रीजेंट थे, वो इन्हीं राजा के प्रशासन में, उनको बुलाकर उन्होंने पेश किया एक ही अमेंडमेंट,
संविधान में जो पास हुआ वो अंबेडकर के इसमें छाप नहीं है, वो ये गोपाल स्वामी अयंगार का है। और आप तो जानते हैं पास हुआ, उसके बाद वो टेम्पररी परमानेंट हो गई थी जब तक हमारी बीजेपी नहीं आई और उसको हटवाया। और उस समय जब कहते हैं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आप लोग तो रोज अंबेडकर की जय जयकार करते हैं, पर ये तो आप बताइए, आपको आश्चर्य होगा 90% हमारे एमपीज को पता नहीं था कि अंबेडकर ने कहा कि मैं ये गद्दारी नहीं करूंगा। 370 को उन्होंने गद्दारी समझा। तो ये इतनी बड़ी नेशनलिस्ट वो थे, उसका कहीं वो चित्र कहीं आता नहीं है। तो मैं ये आपको कहना चाहता। दूसरा है कि संविधान की जो बहस हुई थी उसको डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंग्रेजी के रूप में छपा है, about 6-7 वॉल्यूम्स छपे हैं। उसमें आप पढ़ोगे तो एक जगह में आप देखोगे कि बड़ी प्रयास हुई थी कि जो जिसको कहते हैं प्रियम्बल, आप जानते हैं कि हमारी संविधान का 2 हिस्सा है। एक है धाराएं हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 अप टू आर्टिकल 400। दूसरा है कि उस शुरुआत में एक प्रियम्बल है, ये है जो जनता ने आपको अधिकार दिया है। उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें आस्था का सवाल जुड़ा है, कई चीजें हैं। आपको बराबरी की जो अधिकार है उस पर है। और उसमें 2 शब्द नहीं थे, वो था सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, और दोनों को जोड़ने के लिए संशोधन लाए गए और अंबेडकर ने दोनों के लिए तर्क देकर बहस करके कहा कि ये हमारी संविधान में बैठेगा नहीं। हम तो इक्वालिटी लिए क्या है, तो सोशलिस्ट क्यों बोलो? सोशलिस्ट तो एक राजनीतिक सिद्धांत है। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? हम तो कहते हैं कि सारे सर्वधर्म समभाव वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो किसी को समझ में नहीं आएगी, हम तो इसको नहीं जोड़ेंगे। और वोटिंग हुई उसमें, और वोटिंग में दोनों को रिजेक्ट किया गया। और आप देखिए हमारे साथ कितना गद्दारी हुई कि इमरजेंसी काल में जब सब लोग अपोजिशन को जेल में डाला गया था, इंदिरा गांधी ने इन दोनों शब्द को फिर जोड़ा। अभी मेरे सुप्रीम कोर्ट में मेरा याचिका पड़ी हुई है कि जैसे अंबेडकर चाहते थे वैसे इसको दोनों को हटवाना चाहिए। सोशलिज्म भी नहीं, सेक्युलरिज्म भी नहीं। सेक्युलरिज्म का तो शब्द ही हमारे इसमें नहीं है। सर्वधर्म समभाव, इसको सोशलिज्म इंग्लैंड में नहीं मानते, यानी मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा क्योंकि ये नहीं। सोशलिज्म माने धर्म से कोई संबंध नहीं, राजनीति और धर्म में, सरकार और धर्म में कोई रिश्ते नहीं है। ये तो हम नहीं कभी मानेंगे। हम तो कहते हैं कि जो नैतिक आधार है हमारे धर्म में वो सबको मानने के लिए आवश्यकता है, लेकिन किसी के ऊपर थोपे जाएं या किसी पर कहे जाएं कि तुम्हारे रास्ते गलत है, मेरी रास्ता सही है, ये इसको हम मानते नहीं है। तो इसलिए सर्वधर्म समभाव कहते हैं। तो सोशलिज्म सेक्युलरिज्म उन्होंने उस समय विरोध किया था। कोई बताते हैं ये? आपको कहीं भी आप बात करिए, कोई नहीं बता सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि अंबेडकर इतनी ज्ञानी थे, इन्हें इतनी साहसी थे, वो खड़े होकर बोल सकते थे। जहां सरदार पटेल बैठे हैं, जहां राजेंद्र प्रसाद हैं, राजगोपालाचार्य हैं, इतने लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनके सामने वो कह सकते थे कि ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये लोग इन्हें तैयार थे उसको लाने के लिए, परंतु वो अपनी मान्यता देने वाले थे, लेकिन अंबेडकर इस पर डट के रहे। अब 2 बार उनको जमानत जब्त करने के बाद लोकसभा में अंबेडकर दुखी होकर
उन्होंने एक दिन ऐलान किया कि मैं बुद्ध बन रहा हूँ। उनके घर में पहुंच गए मुसलमान के मुल्ला, उनके घर में बिशप्स पहुंच गए, सब ने कहा नहीं नहीं हमारे साथ आइए हम। उन्होंने कहा नहीं, मैं धारा के बाहर नहीं जाऊंगा, पर बुद्धिस्ट बनूंगा, क्योंकि बुद्धिस्ट में ऊंच नीच का कोई जिक्र नहीं है। तो बुद्धिस्ट बने वो, और बुद्धिस्ट बनने के कारण उन्होंने कभी हिंदुओं की बुराई नहीं की। उनकी पत्नी, पहली पत्नी की देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरे एक महिला को शादी की, और वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, तो वो चुनाव लड़ी थी 1984 में, दैट इज 1984 में वो चुनाव लड़े थे हम लोगों के साथ, ऑपोजिशन के साथ। तो कई बार हमारी उनकी लंबी बहस हुई थी। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर नाम उनका ब्राह्मण टीचर का नाम था और इनका नाम दूसरा था। कभी उनको महार कहते थे, कभी उनको, उनके पिताजी का भी एक गांव का नाम था, वो नाम पर था, लेकिन टीचर का नाम था अंबेडकर, और उन्होंने अपना नाम, आखिर नाम को, लास्ट नेम भीमराव अंबेडकर, उनकी टीचर की मर्यादा के लिए उन्होंने रखा था। उनको कोई ये नफरत वफरत नहीं थी, टीचर ब्राह्मण है मैं उसका नाम कैसा रख सकता हूँ, पर अंबेडकर नाम टीचर का नाम था। ये उनकी पत्नी ने मुझे बताई, फिर मैंने जाकर रिसर्च किया और मैं इसे कंफर्म हुआ कि हाँ, अंबेडकर ने टीचर का नाम लेकर अपना नाम बनाया। दूसरा है कि उन्होंने जो लोग कहते हैं कि वो उन्होंने विद्रोह किया। अब पहले तो ये कहना, वन व्यवस्था का विद्रोह करना, तो पहले तो उसकी अर्थ बताइए, ये वन व्यवस्था क्या है? मैं तो जानता हूँ एक ही जगह में स्पष्ट इसकी परिभाषा है, वो है गीता में। और गीता में आपने कृष्ण भगवान ने आखिरी चैप्टर में, चौथा चैप्टर में, कई चैप्टर्स में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये क्या, ये गुणों से जुड़ा हुआ है। जो ज्ञानी, त्यागी, साहसी है वो है ब्राह्मण। जो हथियार उठाकर सरकार, देश को बचाता है वो है क्षत्रिय। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने कहा है और ये गीता में लिखा है। तो ये जन्म से नहीं था, ये विकृति है कि इसको जन्म से किया है। यहां भी था कि जहां जिसको किसी सामाजिक कारण से पराया किया, उनके बच्चे पराये नहीं थे। और वाल्मीकि का उदाहरण है, वो तो महर्षि थे, उन्होंने रामायण लिखी। उनका माता पिता कौन थे आप पता करिए। और या वेद व्यासा, उसके माँ तो मछुआरा थी। तो ऐसे तो हम बता सकते हैं, परंतु ये अंग्रेजों ने ऐसा भर दिया दिमाग में। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा के जो पुस्तकें हैं, वो सारे चीज हमारे लोगों को अपने पूर्वज के प्रति एक नफरत पैदा करने के लिए है। और ये अंबेडकर ने कभी नहीं माना। अंबेडकर के सारे लेख में, हाँ, ये एक बात जरूर सही है कि आखिर में जब उनके साथ बहुत अन्याय हुआ और उन्होंने कई बातों पर स्पष्ट कहा है कि पहले ये जो कास्ट सिस्टम है इसको भंग करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अलग से करो, उन्होंने कहा पूरा भंग करो। इसीलिए आज उनको हम जरूर यानी साहसी कहेंगे कि उन्होंने उस समय बोला था जब ये एक जमी हुई थी बात थी, ये रूढ़िवादी जो भावना थी वो जमी हुई थी। तो उनको रिबेल मैं नहीं कहूँगा, उनको मैं कहूँगा जिन्होंने पुनरुत्थान करने के लिए आगे आए थे। और पुनरुत्थान वो भी बहस से,
यानी हिंसा से नहीं, वो तो हिंसा के बहुत खिलाफ थे, विरोध में थे। तो आज जो लोग वो इधर उधर घूमते हैं और कहते हैं कि हम अम्बेडकर का नाम लेकर के और उसमें फिर तोड़ फोड़ करो, इसमें हिंसा करो, वो वास्तव में अम्बेडकर के लोग नहीं है। मुझे बहुत खेद है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारत रत्न देने से खुद अपने दस्तखत से फाइल में से हटाया। मैं जब मिनिस्टर था, मुझे आश्चर्य हुआ कि 1990 तक अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दी गई थी, सरदार पटेल को भी नहीं दी गई थी। सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न मिली और अम्बेडकर को 1990 में मिली। तो आप ही सोचिए कि हम लोगों ने ये गलती की, और मैं समझता हूँ कि आज हमारी करिकुलम में, कॉलेजेस में, सब में, जैसे दूसरे देशों में मार्क्स के बारे पढ़ाते हैं या प्लूटो के बारे पढ़ाते हैं, वैसे अम्बेडकर के बारे भी इसी प्रकार से पढ़ाने की आवश्यकता है। इनके नाम पर, इनके लेख पर एग्जाम में क्वेश्चंस आनी चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे तो अम्बेडकर के साथ न्याय करेंगे। और धमकी देकर, तोड़ फोड़ करके, विदेशी शक्तियों के साथ हाथ जोड़कर हमारी समाज को बुराई करना, हो बुरा कहना और उसके विरुद्ध में यानी वो कदम उठाना चाहिए जो अम्बेडकर कभी नहीं मान सकते थे। मैं कहता हूँ ये लोग अम्बेडकर की वास्तव में हितैषी नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने आज जब आपने कहा कि इस पर आपको सब्जेक्ट पर बोलना चाहिए, मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ। और मैं तो डिबेट भी करने चलने तैयार हूँ, कभी आपको चाहिए तो। ऐसे लोग जो कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, और मैं फिर सारे जैसे रिसर्च में साइटेशंस निकाल करके मैं प्रस्तुत करूँगा, और वो तो प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को मैं वास्तव में एक महात्मा मानता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, वो कहीं भी दुनिया में कमा सकते थे, कहीं भी काम कर सकते थे, यूनाइटेड नेशन में कर सकते थे, प्रोफेसर हो सकते थे। और वो सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं, उन्होंने लॉ भी पढ़ा था और हमारी हिस्ट्री भी पढ़कर हिस्ट्री पर भी लिखा और हमारी संविधान बनाई। तो ऐसे ज्ञानी को हम वो जगह देनी चाहिए हमारे इतिहास में जो हम महात्माओं को देते हैं। यही मुझे कहना है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं कुछ सवाल पूछ लूं? जी। जी। अच्छा, आपने थैंक यू। आई थिंक जो फैक्ट्स आपने तथ्य पेश किए हैं, उनमें कहीं भी कोई डिसएग्रीमेंट की बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, जो उदाहरण आपने दिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज यू ऑन एनी ऑफ दैट। इन फैक्ट जो आपने अभी सुझाया, जो अंबेडकर के और कुछ पक्ष पेश करने की कोशिश करते हैं, जिनमें कुछ अरुण शौरी जी के भी फॉलोअर्स हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके साथ जो आपने कहा एक डिबेट हो, आपके साथ वो आए और इन सवालों पे खुली चर्चा हो। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज इट एंड आई विल डू इट सूनेस्ट पॉसिबल। सूनेस्ट। अरुण अरुण शौरी जी को मैं जानता हूँ, तो उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, if he is well enough, I believe his health is fragile. Yes, that's true. If he's well enough, I will definitely get him because he can best defend himself. अगर वो नहीं आ सकते, तो जो उस विचार से सहमति रखते हैं, worshipping false gods, हाँ। वो किताब का उनका नाम है अरुण शौरी जी के। तो वो मैं उनके साथ मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द, हो सकता है अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ही ऐसा कुछ किया जाए। जी। ओके। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल आपसे हैं। जी। एक तो आपने कहा कि संविधान बनाई, इसमें 2 राय नहीं कि संशोधन जितने आए उनको ट्वीक करना, उनको उन पे चर्चा करना। बट ये भी तो सही है कि वो संविधान से खुश नहीं थे। और एक पॉइंट पे उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बस चले तो मैं इसको कूड़े की टोकरी में फेंक दूँ। ये सही नहीं है क्या?
जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था, उसमें मुझे तो रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने पेश करनी होगी। मैंने इस उन्होंने कहा कि 1955 में कहा था। क्योंकि संविधान बनने के बाद 3-4 ऐसे संशोधन जवाहरलाल नेहरू लाए थे जी, जिसमें उनको बड़ा दुख हुआ। जैसे फंडामेंटल राइट्स में जवाहरलाल नेहरू ने एक संशोधन लाई। वास्तव में वो रमेश थापर एक जर्नलिस्ट थे मेरे ख्याल में, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट भी थे। उन्होंने रोमिला ऐसी थापर के भाई थे। हाँ, मिला था ये भाई। तो उनके उन्होंने नेहरू के बारे बड़े यानी शब्द उपयोग किए जिससे नेहरू दुखी हुए। तो उन्होंने सोचा इस तरीके से हम उनको कभी आगे बोलने के लिए अधिकार नहीं देंगे। तो इन्होंने वो संशोधन लाई हैं जो अम्बेडकर ने पसंद नहीं की। मैं समझता हूँ जवाहरलाल नेहरू उस संशोधन को लाने के पहले जवाहरलाल नेहरू ने खुद ला करके उन्होंने पेश किया। उनको अम्बेडकर से पूछना चाहिए था और फ्री कहना चाहिए स्पीच पे पहला अटैक नेहरू ने अपने को बचाने के लिए किया। उन दिनों शंकर वीकली भी बड़े कार्टून करती थी उनके वगैरह, तो उसकी वजह से भी। पर मजे की बात है स्वामी, यू वुड नो इट, रमेश थापर जो सेमिनार नाम की एक लेफ्टिस्ट पत्रिका के संपादक भी थे, बाद में ये और इनकी पत्नी राज थापर नेहरू इंदिरा गांधी के किचन कैबिनेट का उन्होंने दर्जा प्राप्त किया था। उनको कहते थे किचन कैबिनेट। यानी तब तक आते आते किस तरह लेफ्ट ने घेर लिया था कांग्रेस पार्टी के टॉप कमांड को, और पीएमओ तक इनकी पैठ थी। और पीएमओ के अलावा अक्सर जी के अलावा जो पीएमओ में बाकी अफसर थे, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो किचन कैबिनेट था, जो इनफॉर्मली बहुत चीजें तय करवा लेता था इंदिरा गांधी से। सो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपने इस संविधान की बात कही, और ये बहुत अच्छा किया जो आपने बताया हमारे दर्शकों को कि सबसे पहला हमला फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नेहरू की तरफ से था, वो भी केवल स्वयं को बचाने। ये नहीं कि जैसे आज के दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात लोग करते हैं जब दुख होता है हिंदुओं को, उनके धर्म, उनकी आस्था पे जिस तरह के भद्दे प्रहार होते हैं, तो उसको लेके हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है कि ये नहीं चल सकता। एक उसमें तो पहले से लिखा है कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज भी हिंदू समाज में कोई भी इसलिए नहीं उठ खड़ा हुआ जिनको हम कहते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वो पर्सनल अपने उसके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ एक तरफे अटैक होते हैं, केवल हिंदू धर्म पे अटैक होता है, और आप इस्लाम पे करो तो सर तन से जुदा, और क्रिश्चियनिटी पे करो तो वगैरह वगैरह। नाउ दैट्स वन पार्ट। The other part, I think ये जो जय भीम जय मीम का नारा है, इसको लेके मैं चाहूंगी कि कुछ स्लाइड्स हैं जिन पे अंबेडकर बाबा साहेब के कथन है, जहां से जिस पुस्तक को आप कोट कर रहे थे उसी से, ऑन इस्लाम। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज? आर दे फेयर कमेंट्स? आशीष, प्लीज ब्रिंग सम ऑफ देम ऑन द स्क्रीन। क्योंकि जय भीम और जय मीम का तो मतलब यही है ना कि अंबेडकर की विचारधारा जो है वो इस्लाम से मेल खाती है। यही क्रिश्चियंस कह रहे हैं, जो कन्वर्जन हमारे देश में कन्वर्जन माफिया है चल रहा, उनको अंबेडकर बड़े पसंद हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग अंबेडकर्स व्यूज एज अ हाफवे हाउस टू कन्वर्टिंग पीपल टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। पहले बुद्धिस्ट बन जाओ। मैं कई उदाहरण दे सकती हूँ मेरे ही आसपास के, जो गरीबों को बना रहे हैं। पहले मान लीजिए कि आप अंबेडकराइट बन जाओ, लेफ्टिस्ट बन जाओ, that's like halfway house, and then you move towards Islam. So it has, Ambedkarism has become really a weapon to be used against Hindu Samaj. So what do you say to that? जरा
अभी बताएंगे डॉक्टर स्वामी से जो कमेंट्स लेंगे, पहले प्लीज वो ले आइए जो मैंने आपको इसका जवाब देंगे. व्हाई संघ परिवार सपोर्ट्स डॉक्टर स्वामी was in opposition. It was his duty to go as per TN Alliance. नहीं, then why? Because किसी ने कहा होगा तो संघ परिवार तो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना अभी, तो कहते हैं कि किसी ने कहा होगा कि उस समय मैंने विरोध किया था, तो कहते हैं फिर संघ परिवार क्यों सपोर्ट आज कर रही है. तो ये उस अर्थ में ये आया है. हेलो. यस स्वामी जी, वो आया है. अब ये देखिए, हाँ. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. Yes. Now, would you agree that he was right in his assessment? I see. I may in today's situation, I may choose different words. But he is right. Islam does not agree that all religions lead to God. It's my way or the highway. So what he says, the brotherhood is not universal, correct. It's not Hindus and Muslims cannot be treated equally in the eyes of Quran or in the eyes of Islam. And that's what he has said, and that is correct. Then he says that they're getting together is only for themselves. So it's not for others, you see. In fact, in our own country, we had jizya tax. In other countries, we have this where the Muslims are in majority. We have the same thing. Now, we are not criticizing Quran or anything like that, but we say that it is not like our religion. Our religion is all religions lead to God. First, that's very clearly stated. There are many ways to God, and they all lead to God. And so, in that sense, the words he has used are strong, but I think the core meaning is unchanged as far as I'm concerned. Honestly, Swami, I don't find one strong word. It's just factual in the way that Ambedkar was always factual. There's not one abusive word. It's a fact that there's enmity for kafirs. So no matter what we do, हम काफिर ही रहेंगे और काफिर का एक ही इलाज है, या वो धर्म परिवर्तन करे या वो कत्ल हो. दूसरा भी लाइए 2-3. और जिसकी वजह से स्वामी आपने जैसे कहा, he was in favor of total transfer of population. और वो इसीलिए उन्होंने जो 2-3 बातें बड़ी सिग्निफिकेंट कही कि ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस संभव नहीं होगा अगर मुस्लिम्स एक डेमोक्रेटिक सेटअप को सहर्ष स्वीकारते नहीं हैं. And it's always my way or the highway. Then it's not possible. Now, second effect of Islam is that it is a system of social self-government and incompatible with local self-government, because the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country, which is his, but on the faith to which he belongs, which is the Ummah, the worldwide community. Wherever there is rule of Islam, there is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. Now, is he right or wrong? He's partially right. I'll tell you, in Quran itself, and then in Hira and Hadith, you will find that Muhammad was very clear that there are 3 types of societies. Society number 1 is Darul Islam. There, whatever you read is 100% true. Darul Islam is where the Muslims are not only in majority, but they are ruling. Then there is a second thing where it's called Darul Harab. And there the Muslims are not in power, but they are a minority, but they are a substantial minority. There they definitely say that you must agitate, you must convert,
and then ultimately tried to become Darul Islam. So the issue is, it's not immediate. They may not be in a position to start killing people when they are not in a majority. But it is again something which is where they don't accept the society, because Darul Islam is a temporary thing, नहीं, and Darul Harb is temporary. No, excuse me, Darul Harab is temporary, and the goal of all Muslims is find ways and means, not necessarily by killing, but by other means also, to convert this into Darul Islam. Third is, which is very few people know, this Sayyid Shabuddin told me about it. It's called Darul Ahad, where Muslims are in a hopeless minority. And by the way, Darul Islam, Muhammad also, Darul Harab, Muhammad also said, where the majority is not strongly united. There he said that keep pushing. No, but it also means land of war. It's a place where you have to wage war till you become a majority. Yes, that's right. But war necessarily doesn't mean only by violence. It could be by any other means. But anyway, the Darul Ahad is where the Muslims are in a hopeless minority and the majority is united. There, Muhammad says very clearly, surrender. This is Al-Taqiyya, it is called. And it's a temporary thing where whatever the majority says, accept. So you will find uniform civil code in America, the Muslims accept. You will find in any country where Muslims are 5%, 6%, less than 10%, you will see that the Muslims will agree. Yes, we will follow your mores. So therefore, it's not, these societies, he has stratified the societies. That is the only thing I would add. But broadly speaking, Ambedkar had the nerve to say it in black and white, and therefore we don't have to repeat it, because now we are a separate country with 80% Hindus, and I don't think the Muslims of India are at this stage, in any sense, in any practical sense, are being aggressively doing conversions. They're not. I mean, look at the speed. No, What they listen. did in Kashmir. No, Kashmir, they are not in minority. Kashmir, no, I'm saying what they're doing in Jammu province, where they were in a minority. Now they've changed the demographic profile of Jammu province. That is by birth. That is by birth rates, not by killing. No. In the anyway, we'll have it another day. But the point that I think that's significant is this kind of clarity in being able to use the right words for the right thing. Because even today, most politicians will not say, this is Islam for you. These are the core principles of Islam for you. Whether they implement it or not every Muslim believes in them. I have read Islam very thoroughly. I understand it. And sometimes people misunderstand me. In fact, my old university, Harvard, was very upset with some of the things I said. But the fact is that there is a way of ensuring that we can continue without losing our position, and without having to use violence to subdue any community. And that's in a democracy, I think it's extremely important. This question is that, but the Hindus must be clear that this is a real danger, and therefore why we have to unite, why we shouldn't be divided in castes, and so on. Those are things we can do, but I don't think that we should put it in these terms, because I think most of the educated Hindus I know, and not most of the educated Muslims I know,
don't speak to me in this language or defend such a language. I think we won't argue on that. We'll just Yeah. agree to disagree because they've openly announced Mughalistan banana hai. Bharat tere Oh, टुकड़ों हो गया. who announces it? You know, चलिए Swami, we'll leave that because I want some more quotes coming. ये okay. All right. incomplete है, Ashish. Bring the either the full quote or the next quote. Yeah. ये तो हो गया ना, ये तो हो गया. Next. या हाँ. ये जो है कि वो अभी यूपी इलेक्शन में भी ये हुआ कि कितना भी पैम्पर कर लो, कितना भी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, बट दे डिड नॉट वोट फॉर even an administration that tried to do its best in terms of treating people at par. तो वो programs नहीं, religion comes first, it doesn't matter. मुस्लिम कैंडिडेट जिताना है या दरल हर्ब में जो दरल इस्लाम बनाने में मदद कर सकता है उसको जिताना है. ये एक एजेंडा बहुत क्लियर है. Would you agree? अब मैं कहता हूँ हिंदू में एकता हो जाए तो ये इनका कुछ भी विचार हो सकती है परंतु उसका कोई चलेगा नहीं ना. हिंदू एक बार ये तो बीजेपी तो धीरे धीरे दिखा रही है. जहाँ हिंदू कंसोलिडेशन होती है वहाँ किसी के पास कोई चांस नहीं होता है सरकार बनाने के लिए. तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए या मुसलमान का कुछ भी है वो कभी सुधरेगा नहीं उसके. मैं नहीं कहता हूँ कि मुसलमान के बारे में सोचना भी चाहिए. हमारे में जो विभाजन आई है जात पर, प्रांत पर, भाषा पर, उसको मिटाकर हम हिंदू हैं, ये कहने के लिए हम लोग प्रचार करनी चाहिए. बहुत सही बात. There I'm fully with you. Next, एक आध और स्लाइड दिखाओ and then we'll take questions from the audience. इलेक्शंस की बात है, चलिए ये भी छोड़ो, इलेक्शंस पे नहीं जाएंगे, वो हमने देख लिया. इसमें बहुत चर्चा हो रही है मुस्लिम वोटिंग पैटर्न क्या है, वो किसको जिताते हैं. आगे कोई है नहीं तो we'll take questions. But there was one part about their unwillingness to obey the dictates of a secular government. जरा वो ले आइए जो आशीष पहले था ना, सबसे पहले वाला. We'll take that and then Swami ji will answer questions from the. नहीं ये नहीं, next. Basically in this he's saying polarization is inherent to Islam. They will vote for a candidate in election that will help consolidate Muslim power. Nothing else matters. They don't vote for citizenship rights, but they vote for movement from Dar al-Harb to Dar al-Islam. That's really what he's saying. No, there would have been hardly any Muslim MLAs in UP today. What Samajwadi Party did. So the fault is not the Muslims. The fault is the Hindus. True. So next, I mean, Ashish. Yeah, go ahead. Next, Ashish, are you bringing? नहीं तो लोगों के हाँ, because the secular categories have no place in their life and they only recognize one governing principle, which is Muslim political universe, namely religion. That's the overarching governing principle. Is that correct? In Darul Islam, yes. But Darul Harb? in Darul Harab, you will not find this kind of clarity. It will be depends on the area. Supposing it's some part of Bengal, there you'll find them like that there. If you go to Karimganj, you will find it like that in Bengal and in Assam. So if there are parts of Kerala and Tamil Nadu also where they're like that. But that is all our fault because there the Hindus are all divided. And so I think the only answer for Muslim integration is that the Hindus also should now stop looking at all this caste and all these things. They're all out of date and start looking of themselves as Hindu, whether they are in Tamil Nadu or in Kashmir or in Assam or in Junagadh. That is the question. Basically, is that there is a fault line in the Hindu community that should go. Then all these will be taken care of without difficulty.
Swami, because I really like your clarity in this regard because, the third category that you said, you were yes, introduced to by Darul Ahad, yes, Darul Ahad, Darul Ahad, which yeah, is where they are a tiny minority, they will accept. So, moral of the story is never let Muslims go agree. anywhere near becoming Darul Harb. Keep Out them under beyond, Darul Ahad yeah, category. yeah, beyond 15%, they should not be there. I said that. You In fact, know, Pakistan keeps it quoting has me to on. be 5% or 3% or 2% because in Europe, where they've become even 5%, they've created Sharia zones. They've Yeah, created well, Sharia. You would know uh, that. I think in a country like India, we can do up to 15%. I don't think. Uh, 15% yeah, is safe? 15%. Yeah, maximum. Yeah, No, at but the moment see, is 13%. People exaggerate saying, no, 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 this census not getting the figures right and all that. But I have done my own statistical analysis. I'll say they are today 13%. And they were perhaps 11% at the time of partition. You made the original mistake. If you are going to divide on religion, you should have divided by religion. This khichdi that we have ultimately done, we are divided on religion, but only for the Muslims, not for us. And for us, we all of us are got, how many Hindus got butchered in Pakistan, thinking that Hindus and Muslims can live together. So therefore, look at yourself first, and then I think yeah, you can deal with the Muslim community. I think that's one of the sanest statements and the clearest statements I've heard, which is you fix yourself. The problem is with you. लास्ट Yeah. स्टेटमेंट एक और ले आओ जिसमें है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़े रहते हैं ना, हाँ, Uh-huh. हाँ, ये, Well, guys, which this is is that whether living under a Muslim or under a non Muslim administration, the only allegiance a Muslim is commanded by the Quran to acknowledge is his allegiance to God, to his Prophet, and to those in authority from among the Muslims. This must make anyone wishing for a stable government very apprehensive. But this is nothing to the Muslim tenets, which prescribe when a country is a motherland to the Muslim and when it is not. You know, yes. to be so clear sighted, I am truly, I mean, the prescience of Babasaheb Ambedkar. He To was an understand Islam, today, for the first time after social media's advent, Hindus are actually engaging with Islam. None of our political leaders of the freedom movement, which witnessed riot after riot, from Mopla massacres to this massacre to the partition massacre, not one leader spoke with this kind of clarity कि ये उनकी मजबूरी है, उनको अपने मजहब की इंटेग्रिटी बनानी है तो वो नहीं कर सकते जो आप उन्हें यूसीसी वो नहीं स्वीकार कर सकते. आप क्यों मारे मारे घूम रहे हैं उनको सुधारने के लिए जब वो नहीं कर सकते. you know your limits and understand their compulsions. Would you not agree? Well, I would say on triple talaq, our own feedback is that people are beginning to implement it in the Muslim community because there is a criminal offense associated with it. There are ways of doing it. In Australia, you should go to Australia. There was only once one mullah said that he would like his a separate marriage system, and the prime minister there was a lady who said, if you want a separate system, you better go to some other country because in Australia it's not possible. Next day, almost all the Muslim organizations gave it in writing to the prime minister. We don't share this view of the mullah. We are with you. That is called al taqiyya. So get That's into right. Which is another word for, in English it translates as deceit or masking your real intent. yeah, no, Masking. you're being your मजबूरी है आपकी उसको मजबूरी है. उसके हाँ उसके बीच में बिल्कुल, तो उसी they भाषा won't में say that बात करनी पड़ेगी तो बात सुधरेगी. यूसीसी फूसीसी से नहीं चलेगा. Anyway, now हाँ let's take questions that have come so that Swami can engage with. इसको अभी छोड़ देते हैं.
किसी और दिन ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे. Swami has done a great job telling us when will we get Uniform Civil Code and Cow Protection Act. Swami, बताइए. Well, I'm not in favor though. we can get it tomorrow. It's there in the Constitution. Article 48 is cow protection, and Article 44 is Uniform Civil Code. Why is my? Please ask Mr. Narendra Modi. Everybody says Modi is their leader. Go and ask him why he's not doing it. I have written him several letters on this that this should be given. So I would like to see him do it. I mean, we are ready. We went to court. Court said we are fully for it, but it is in the directive principle. So it's the government which has to do it. We can't order in the court. It's in the if it was in the part of your fundamental right, the courts could have ordered. But part of directive principles is a obligation of the government to do it. If the government doesn't do it, then there is no scope under the Constitution, under the directive principles, for the court to give a direction. You do this. No, but they did it in the case of Khap Panchayats. They constituted a law commission ki committee which drafted a whole law without actually having Khaps represented in the Supreme Court. It's not I part had of to the. intervene at that point and say you can't have hearings against Khaps without their presence in court. 3 years the Supreme Court The Khap thing came on the question of fundamental right of women. And it was never a question of Uniform Civil Code. It's not a question of events on Uniform Civil Code. Swami, we'll have a discussion on that someday. Yeah, we'll have a discussion. I went to Supreme Court on behalf of Khaps, so I have a little more nitty-gritty information. I know. I also go to the Supreme Court. So no, you are, of course, and you win the cases, right? I'm not never. I can't compete with you. No, it's okay. We'll have a discussion. This is important to get clarity on this. What we can do through the courts and what we can't do through the courts. Ji. Okay, now there's another question. This is Devang Bhatt. वो आपसे नाराज है, तो इनकी भी ले लेते देवांग भट्ट से. And Swami is very good at fielding difficult questions, but this is not a difficult one. It's नाराजगी of an admirer. Please, Devang ka laiye. Madhuji, I'm so sorry. Don't mean to spam. Feel free not to show this comment. But this man talks about Hindu unity, but supports Sonia Gandhi, Mayawati, and Mamta after the Bengal elections aftermath because of personal gains. I think personal gains to nahi kehna chahiye, but Swami, you'll answer it for me. I'm not answering on your behalf. I supported. I was ally of Jayalalitha. I didn't support Sonia Gandhi at all. This Jayalalitha who wanted to bring down the BJP government, and the BJP government, you must remember, they brought this Setu Samudram project to destroy the Ram Setu. I had to go to court and get it stopped. Vajpayee's government was not a Hindu government. It was a coalition, and they did all kinds of things which they shouldn't be doing. You talk about Sonia Gandhi. What about Vajpayee enabling Mr. Rahul Gandhi, caught by the Boston police carrying drugs and lots of cash? He got him released. Only I am asked to give an explanation. This is wonderful. I was not with Sonia Gandhi. I was with Jayalalitha, and Jayalalitha said we have to work with her and Mayawati to bring down the BJP government, because the BJP government was trying to topple, to split her party, which I know they were trying to do so that their numbers can increase. But you can't say one Swami can bring down the whole of the BJP government. How can I do it? So these are all, they can't find anything else to say against me. So they say these kinds of ridiculous things. Yeah, even now, many of your honest criticisms, critiques are misunderstood. Yes. And Devang has another point that because I don't want people to think that I'm trying to protect you, which you don't need any protection. So here's one more.
इट्स इम्पेरेटिव, स्वामी जी आप मधु जी के शो पर हैं और मेरे लिए उनका मान सबसे ऊपर है, बट इट्स इम्पेरेटिव समवन प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू. आप अपने थे, उद्धव ने और आपने जो खंजर मारा है वो सबसे ज्यादा दर्द देता है. कौन सा खंजर मारा मुझे भी बता दो, मुझे नहीं हाँ, पता. हाँ, मुझे तो नहीं पता है। मैं तो उद्धव मैं तो खंजर वो समझता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारे मंदिरों को सरकार ले ले उत्तराखंड में, मैं कोर्ट में गया तभी तो वापस हुआ। तो अब उसको खंजर कहते हो। No, that I think was a historic intervention. I personally am grateful for it. Yeah. आप आशीष ये स्क्रीन पर क्यों नहीं ला रहे हो? जो भी आए हैं सुपर चैट में, और भी कोई हैं तो ले आइए. ओके. LK Intelligence. Swamiji is highly educated, sharp mind. Yes, we may have differences with him, but let us be pragmatic on him. Don't compare him with illiterate MPs. और बिल्कुल, you know, actually, your qualification, your CV is so impressive that if I started reading it, I'll get an inferiority complex. But I do want to read it, and I want to have you on our show to talk about economic issues, because Yes, that sure. is where you're most misunderstood. And that's where you really, like Babasaheb, you deserve to be heard on those issues. So I'm going to request you for a series of talks on economic issues. So people understand that it's not malafide, it's not motivated, it's not like you are seeking the finance minister's post, though it would have been very good if they gave it to you. I certainly would have been happy. But Seeking to whom? Nobody can say one person I've gone to and say, make me finance minister. I've neither said it to the RSS, I've neither said it to Mr. Modi, nor I've said it to anybody else. You don't want to give it, you're the sufferer. The economy is gone down. The growth rate has been consistently going down from 2016. yeah, So, I mean, this is usual that, we're still living in the British rule mentality that the governors are not responsible, it's the people who are responsible. I would really like to also have you review the handling of the COVID Yeah, issue sure. and what they did to the economy. Was it at all necessary? I'm of the view no lockdown was necessary. This epidemic is such a scam. That's my view. But I'm going to bring you on the show two heretics talking to each other, because I also get misunderstood often enough for being forthright in my criticism. So anyway, एक और आया था देवांग का, वो ले आइए. एक और था, हाँ, फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू सेतु समुद्रम. ये देखिए, लाओ ना भैया. हेलो हेलो. हाँ, I will always be indebted to you, Swamiji. I'll concede that. But humbly, your support for Mamta and Bindrawale is all over YouTube. I'll disagree with you respectfully on a lot. Please explain this. But I'm not supporting Mamta, I'm our friend. And I've known her for a long time. This is a democracy. Can't. If two people agree on everything, then one of them is not necessary. We have, democracy. We have differences, but that doesn't mean I can't be friends. And I've known her for a very long time, and I admired her fight against the communists. And she fought them single-handedly. And today there are no communists in Bengal. So I'm supposed to look for the Devis and Devtas. They don't exist in this world. This is Kali Yuga, you must remember. She has done what nobody else could do, namely to eliminate the communists. And whenever I have gone to her saying that this temple is being taken over by some politicians, she has intervened and prevented that. So her politics is her politics. I'm not in her party. I've not joined in a party. I've not advocated, I'm not like Shatrughan Sinha or Yashwant Sinha and all going and joining a party. I can because she is a very old friend of mine. And but
this country, you see, it's all become regimented. I mean, you can't have friends. How can you have a democracy if you can't have friends across the floor? And same thing with so they gave some other name, Bindrawala, I think. Bindrawala, he invited me to spend time with him, and I was convinced that he's not what Mrs. Gandhi said he was. In fact, Mrs. Gandhi created him, and then when he began to get spiritual and become uh, she blackened his name, like RSS's name has been blackened on RSS, on Mahatma Gandhi's murder. Show me one place where RSS name is there in the FIR or in the court case or in the presentation of the charge sheet. Nowhere RSS is mentioned. Yet Mr. Jawaharlal Nehru banned it. And all over, over the years, people have been saying RSS is killed Mahatma Gandhi. Even the other day, Rahul Gandhi said it. Now he's facing a defamation case. Swami, will you come and talk to us about Bindrawale? What you know of him? Certainly, What he was? Well, that would be eye-opening. No, And he was not. He was not for Khalistan. I asked him one day straight because I spent 5 days with him in Akal Takht. I asked him, "Are you for Khalistan?" He said, "No." I said, "Why is everybody saying that you are for?" He said, "मैं कहता हूँ कि वो देंगे तो मैं क्यों नहीं लूँगा? मैंने कब मांगा?" So I mean that's fair enough. You are saying that he's Khalistani. He's Khalistani. Don't give Khalistan. but what Don't was even he talk for? about. He was propped up by Azhar Singh He to used destroy the Akali Dal, right? No. See, the Akali Dal was very flabby at that time. He was, in fact, his speeches are something that you should see. Ask them to produce the tape recording of his speeches. He's against drugs. He's against ill treatment of women. He's against dowry. All these things. I had one place you give me a tape where he has said, "I want Khalistan." Not one place. But We do have it. We do have blackening it. somebody's name, in India, Mrs. Gandhi's time, I was all the time called CIA agent. Now, Mr. Our all these Andhubugs and Gandhubugs, as we call them, they call me I'm a Chinese agent. I'm the only one who's attacking China, saying get out of my country. Mr. Modi is the one who's not who's saying koi aaya nahi, koi gaya nahi. So in India, they just go on saying these things, you see. But I have friends all across. I am not going to not be a friend with somebody who I have difference of opinion. This is a democracy, that will be the ruination of it. I fought for the emergency, for democracy during the emergency, while everybody was writing apology letters. Tell me, Swami, you say Yes. you're a good friend, and I'm fully with you that one must be able to deal with people across the political spectrum. Else, how do you understand them? Yeah. Except through stereotypes, which the Yes. media presents or Yes. interested partisan politics does. Yes. So, in that sense, I think that's the only way to learn what the real worth of a person or nuisance value of a person is, by engaging with them. I do it like you. But would you not agree that Mamta now has what Devang was saying, Hindu blood on her hands, that she has turned, while she may have destroyed one kind of fascism, that is commie fascism, but the Islamic fascism, which is playing a havoc in West Bengal, and the election saw this, the violence, of course, Yeah. the way BJP conducted, the way Prime Minister Modi and Amit Shah left their own party cadre to the wolves. They allowed them to be slaughtered. I mean, don't you think that you need to be able to at least tell her कि इंसान बन जाओ भाई, तुमने अच्छा काम किया. Why can't Mr. Modi ask me this? Please talk to Mamta and ask her to stop this. Why? What you mean? They have no work? One is the Prime Minister, the other Home Minister. You mean they can't register a case? I can give you constitutional provisions where they can intervene. I'm not talking about dismissing the government, which is 356, but I'm talking about 256, where they can
in fact, appoint senior most, magistrates, senior to every state magistrate, and he can take cases. Now, you just made an allegation that she has done it. Well, then prosecute her. I did it when I was a minister, by the way. I did it with Karunanidhi, dismissed his government, and I proved it in court. So, these are all. That's a very important point you're making, Swami, and I'm Yes, really grateful to you for this. What you just said, that yes, even short of dismissing the state government, yes, they can use Article 256. yes, If you were Prime Minister, and despite yes. the fact that Mamta is your friend, would you have done it? Of course, I did it. Karunanidhi was my friend. I did it because he was with LTTE. I said, "You stop this." He didn't agree. He said, "No, they are Tamils." I said, "To hell with them. They are traitorous Tamils, and we'll dismiss your government." He says, "The rivers of blood will flow." I said, "Okay, let me see." And nothing happened. And then we held elections, and he got only 2 seats out of 234 seats in the assembly. Karunanidhi was devastated, and he never again spoke for LTT again. True. Very few people remember this part. I mean, I'm so glad you're refreshing my memory. Yeah, And it's always a pleasure. It's always a pleasure to have you go back and cull out these amazing stories from your own yeah, repertoire. yeah, And we're going to have you more often, Swami. First, Bindramala story, yeah. then COVID and the mishandling of the lockdown and the economy. These are two things that we really need to. And if and then going on, there are so many. I mean, my curiosity is now getting whetted for a lot more, and I hope we'll have you time and Sure, again. And sure. many of these ले आइए if Swami is in favor of Hindus, ask him to speak on Hindu exodus under Mamta's nose. But he just spoke. Didn't you, Swami? What would you say? Oh, what exodus? Somebody should come and give me a petition saying that we have been driven out of our houses. Nobody does that. I've gone to Calcutta, and I've asked people to give me. I asked the BJP party, please give me. They didn't. It's all propaganda. No, if there are such cases, may I Sure, announce on your behalf I will. I have that done it. if such cases come to you with solid ground and proof, but there Yes. was a time when they ran to Assam, there was even a relief camp set up. But I will certainly make this announcement. If Swami is saying it, he means it. So Yeah. please, let's bring cases and Yes. let's see how Swami And, handles and this. then they must support me that the government of India failed to do it, because if I can do it, the government could have done it much earlier. Yes. They've got Yes. the IB, they've got the police, they got everything, you see. So, Okay, ये क्या आशीष please ये क्या है take my question till when Modi can get Nobel Prize क्या when झल्ले he, बात when करते he, हो हाँ when he hands over the Ladakh to the Chinese, I'm sure he'll get the Nobel Peace Prize. Swami that's so devastating a comment But by he has allowed the Chinese to take 4,000 square kilometers already and said, koi aaya hi nahi. and when he does total U-turn on Article 370 maybe also because they've been very mixed signals. I It's one know. step forward, two steps backward, I'm, like I'm, the I'm, residence clause 15, 16 years, no other state has that, and they're not making the slightest I get, move for the return of Kashmiri Pandits. No yes. talk of scenic colonies, no Yeah. talk of how you're going to rehabilitate. It's all over, and Yeah. it's business as usual. No, no, they are afraid of the Americans. Americans On have the one warned side, them. China, on the one side, who are they Yeah, not yeah, afraid of? yeah. We're afraid of everybody. We're afraid of the Russians too, because you don't want a confrontation. So you do it. You tell me, you go and ask any military man, has not the Chinese come and occupied 4,000 square kilometers of your land? And which land? That which we both agreed in 19, not we agreed in 1995. We drew a line of control, actual control, and said, okay, till we settle,
Whether whose land, where is with whom, we don't go into that question. But this shall be the line we shall observe. They have violated that and come across. Why and I asked a question in Parliament. You know what answer I got? In the Hmm. national security interest, we can't tell you how much land the Chinese have taken. Oh my God. Yes, in writing, it came in all the papers. Yes, I know it did, but you know, So why I can't be told as a member of Parliament how much land Chinese have taken? Why not? So this is what I mean by chamchagiri, you see, or hero worshipping. You're not, you think the other guy is the bad guy. I agree with you. There's Yeah. a suggestion for you from Ridhiman Agarwal. Says, Madhuji, please ask Swamiji to read Understanding Muhammad by Ali Sinha. And I can. I'm sure you know Islam better than Ali Sinha, but I'll still send it to you. Okay. On Okay. Now there Okay. is one more question or suggestion. There was for you. 1 second, and that will be the last one. Uh, when will BJP get rid of the Waqf board law that allows Muslims to legally steal property of others? If BJP is not ready to declare Ram Setu as a national heritage monument when it satisfies all the condition and opposes me in the Supreme Court on it, what do you expect me to go and make the BJP abolish this? Ah, I think you are articulating the hurt and frustration of many of us with these. All right. Preetham But says, but we are, Dr. Swamiji. but we are still better than Congress, huh? So I Oh, yes. can. Oh, yes, yes, yes. No doubt. Even if somebody put a gun to my head and said, vote Ah. for Pappu, I wouldn't do that. I wouldn't do that. I say it no matter what. Okay, Swami, here's last one. There are cases in West Bengal High Court regarding post-poll violence. Yes, So, but Swami is saying, if the High Court of Bengal, I think that isn't that what you said? That there are yes, ways to handle those things. Swami, yes, would you like to respond to yes. this? Well, ask your lawyer why is it taking time. You should go and ask for urgency. I know what courts can do. If you just file one and then not turn up, or Hmm. you take adjournments, I don't know what you have done. You see, I have seen many times people telling me, I filed a case, nothing has happened. Then when I check, I find the guy has been taking adjournments because he is not able to pay the lawyer's fees. So then you go to legal help and ask them to give you a free lawyer. You see. True. There's another one by Devang Bhatt. Here's a very sincere person. I can tell you that his comments are not born out of any That's okay. malice. But I That's do therefore want you to take देवांग भट्ट का लाओ जो एक और है ये मैं तुमको फोटो भेज रही हूँ आशीष. It's important that Devang gets to understand Swami through his own words, um, not through me. So here I am. So Swami, I'm sending this, and in the meantime, I'm reading. Ashish, please bring this on screen. Devang says, okay, it pains me to hear your defense, Swamiji. I used to adore you. Anyway, I live in New York, work in finance, served in the US Marines, so I know about certain aspects of politics. Would love to discuss in person on your next visit. but I don't know what he's unhappy about. Yeah, What's the use of my talking with him without knowing what he's unhappy about? I think he was unhappy that you supported Mamta or you are friends with Oh, Mamta. well, there's nothing further to say. She's my friend, Yeah. and I admire her courage for fighting with the communists. If anyone brings me, for instance, there was a case of somebody brought to me a case of a temple in Hooghly called it was a Shiva temple, Yeah. and she had brought out a geo saying that the a Muslim minister would be in charge of that.
of that whole Hubli area, and the Muslim minister then announced that he is going to renovate the uh, the Shiva temple. So I went to her. I said that this can't be done, and you have allowed a minister, a Muslim minister. So she told me, don't say Muslim minister. I said, what shall I say? She said, me say only minister. So I said, all right, you can't give a temple to a minister. So she said, I agree with you. She issued an order immediately and it was withdrawn. You know Now, what I'm going to suggest to all the people from Bengal? Several hmm, people come to Delhi, and some hmm, of them have also met me from Bengal, hmm, who are hmm, very unhappy with the way the BJP has let them down. They are left defenseless. They're very, very unhappy. And they've also told them not to speak up, not to, expose what's happening, ah, and the manner in which some people mishandle the election and all that. I'm going to tell them to bring their issues to you. Please guide them. They sure. really need guidance on Again, how to. And if on their behalf you can no, intervene with Mamta there's Ji. there's a easy way. They can send me an email, and then with it the telephone number, I'll have somebody from my organization. I have a separate organization called Virat Hindustan Sangam. I'll send one of them to go and meet them and That's a then good get idea. the facts. No, I'm no. going to pass this message to several of those who have contacted me, Yeah, thinking that maybe I can get their issues across to the party high command. But who am yeah, I? And I can yeah, only talk in the public domain in the hope that they hear and do course correction. yeah, So, yeah. um, Party, the government of Narendra Modi blocks me on Ram Setu. They even opposed me, by the way, on my case against the Manya, temple in Uttarakhand. They came against me. And there, my God, their people said so much abuse in the papers. One of the principal advisor to the chief minister even put out a statement in the papers that if Swami comes to argue this, he will not go back alive. Can you believe that? no, I can't believe it. Yeah. And I brought it to the notice of the government, but they did nothing. So, I mean, listen, the commitment to ideology is something that is weak. And I say that it starts with Narendra Modi himself. I can tell you many things which he should have done for as per ideology. Even Article 370 was brought in after it became very, very difficult for him. I must say the RSS also brought this into a major pressure. And then you see suddenly it's all thanda. I'm going to Srinagar to find out what the situation is very soon, next month. But please do stop at Jammu. Don't stop just Oh, at visiting of Srinagar. course, of Please. course. No, no, I know Jammu. I've been many times to give lectures in Jammu, so I know No, but Jammu. this trip also, a lot of people would love to meet you there, including All right. some people who had come to meet you with me. And Okay, fine. they're very keen to have a dialogue with Sure, you. sure, sure, sure. Also, the National Herald case, which was opened in National, Shanghai. national. Now, listen. Somebody asked me about some Archaka case I filed. The Supreme Court is not listing it because the Advocate General the Solicitor General goes and tells the leader, no, 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 don't list it. I mean, this is the kind of thing that's happened because that is a wrong thing that has happened, and it's not even our government; it's the DMK government. But why they won't want to list it? Same thing with National Herald case. I mean, National Herald case, I've already shown that that building that is there on Bahadur is totally illegally taken by the Congress party. And a case was filed by Hardeep. And then they won in the single judge high court, double judge high court, and now it's going to Supreme Court. It's not been heard for the last 2 years. Now, how am I responsible if I say something over there saying Swami is all the time criticizing his own party? Okay, last question from somebody called Arjun who says, I please raise my question. I can't send it through super chat. Arjun ka le aao bhaiya, kahan hai question? He's only saying raise my question, but where is the question? This will be the last
viewers. But we're going to have Swami time and again. And आ रहा है कि नहीं अर्जुन? अगर तुम्हारा मेरे को तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो next maybe time. next time then, since I can't see it. You've already answered the TN Archika's case. Yes. There was a lot of, lot more questions, but you're going to come again and again. We've had your time, 9:33. And viewers, I want to tell you another thing. Most of our guests usually come a little late or just on the nick of time, so that we are rarely able to start on time. Swami not only came on time, his office called me and said, why aren't we starting? This was 10-15 minutes before time. And that's typical Subramanian Swamy for you. Pleasure talking to you, Dr. Swamy. We'll have you soon again on at least these two issues I mentioned, and lots more. An economist. Yeah, you coming as an economist. Honestly, as I said, if I read your CV, I get inferiority complex and I may be tongue-tied, but never mind. I'll risk it. Okay, Ji. Thank you, Swami Ji. Or thank you, viewers. I'm sure you learned a lot, including some defogging of our brains with regard to the misunderstandings or the misinformation that's been systematically spread about Dr. Swamy. Please do support Manushi, do like, subscribe, and share this channel. And talk to you tomorrow again, same time, 8 p.m. Shubhratri, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. Thank you, Swamiji.